Okay, welcome. Namaskar. Welcome back. We are meeting yet again this evening for our lecture 3 of the series of injury. Okay. If you recall, हमने 3 दिन पहले इंजरी का अपना सेक्शन चालू कर दिया था एंड yeah, it has been good, fascinating last 2 days discussing about mechanical injuries. So हमने पहले दिन क्या किया था? We discussed about mechanical injuries caused by blunt weapons. Okay, and then on day 2 we talked about mechanical injuries caused by sharp weapons. ठीक है, उसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज देखी, किस तरीके से ब्लंट वेपन से इंजरीज होती हैं, एब्रेजन, कॉन्ट्यूजन्स, लैसरेशंस, एंड हमने उनके बारे में हमने कुछ पढ़ा. देन ऑन डे 2 वी टॉक्ड अबाउट sharp weapon injuries. That was yesterday, and we talked about incise wounds, we talked about stab wounds, we talked about chop wounds, and we talked about some important medico legal scenarios, particularly in reference to the importance of incised wounds there. And we talked about self-inflicted injuries, we talked about suicidal injuries, we talked about genital injuries, we talked about defense wounds or defense injuries, and we talked about one more, and that was all that was to be known about the incise wounds. जब हम बात करते हैं to incise wound की beginning की, there is a great deal of world around incise wounds, and of course around stab wounds and abrasions and क्या कहते हैं lacerations. अब आज हम क्या करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीजनल इंजरीज. रीजनल इंजरीज मीन्स, अभी तक हमने बात करी कि what are different types of injuries. Today we are going to pick up certain important regions of the body, and we are going to talk about the importance of these injuries on those regions of the body, and उसको एक सब नेम दिया है टॉपिक को, that it is called as regional injuries. Okay, so आज हम इसकी बात करेंगे. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, बट जैसे कि मैं रोज करता हूँ, आज भी आई वुड जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन हैं और ये चैनल देख रहे हैं और शायद कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं, दे नो मी, बट देन there would be certain people who would be watching this channel recording के बाद YouTube पे. For all of you, I am Dr. Sumit Tellewar. I did my graduation and post graduation from Delhi University. Okay, I am MD in forensic medicine with more than 15 plus years of experience in teaching UG students, PG students, and also students who are PG aspirants. Okay, I have been a mentor and a teacher or a coach, you can say whatever name you want to say, for All India PG, state PG examinations, AIIMS PG examinations, PGI entrance examinations, and whatever different kind of examinations जो हमारे यहाँ होते रहे हैं. By the way, मैंने पहले कभी आपको ये नहीं बताया क्योंकि मेरे दिमाग में आया नहीं. आई हैव बीन अ टीचर इन MCI स्क्रीनिंग ऑल्सो. सो ऑल दोज फॉरेन ग्रेजुएट्स जो इंडिया में आकर के MCI का स्क्रीनिंग एग्जाम देते हैं सो दैट दे कैन फर्दर प्रैक्टिस इन आवर कंट्री, द सब्जेक्ट रिमेन्स द सेम. ओके, उसमें कोई एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं देना होता. सो आई हैव बीन वर्किंग विद देम ऑल्सो फॉर क्वाइट सम टाइम. ठीक है जी, तो ये मेरा छोटा सा पोर्टफोलियो है, एंड आई होप कि आपको पसंद आएगा.
बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नो। पोर्टफोलियो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं, क्या आपकी कोई क्वेरी हो सकती है once you have been through this lecture, and if there is any query you can connect to me at Telegram app. So आपको करना क्या है, just need to download the Telegram app in your phone or any other handheld instrument or any other device जो आप इस्तेमाल करते हो. It could be a tablet, it could be any other device, and then you just need to click this link which is livedaily.me/neetpg, and if you will follow this link, वो आपको टेलीग्राम ऐप पे मेरे पास लाएगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, हम वहाँ पर उस क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको रोज कुछ ना कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए. आज भी वो अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ूंगा. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लाइव क्लास हैं भाई, इंटरैक्टिव क्लासेस हैं एजुकेटर के साथ में. मेरे जैसे और बहुत सारे ब्रिलियंट एजुकेटर आर ऑन दी फोरम. लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स हैं. आप एमसीक्यू लाइव अटेंड करते हो, अपने अटेम्प्ट करते हो अपने एजुकेटर के साथ में, और वहीं से आपको पता चलता है कि आपकी जानकारी कितनी है. एंड इफ यू डू नॉट नो एन एमसीक्यू in and out, even if you're making a guess, you can almost create association that आपके guesses कितने right होते हैं. So are you on the right track or not? So it's kind of a simulation of exam itself, कि अगर आप एग्जाम में बैठे हो और उस समय you are getting an MCQ, how do you attempt an MCQ? Okay, test series and analysis so that you can keep rehearsing and practicing yourself again and again. एंड इसके बावजूद अगर आपको कोई कठिनाई होती है, कोई तकलीफ होती है, यू हैव क्वेरीज, यू हैव लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस विद योर एजुकेटर. ओके, अगर मेरी बात पे आपको अब भी विश्वास नहीं है, आई वुड रिकमेंड प्लीज गो एंड सी स्पेशल क्लासेस. स्पेशल क्लासेस आर फ्री एट Unacademy Learners app for all the students. These classes are specially designed to give you an idea कि आपके लिए Unacademy plus NEET PG plus का सब्सक्रिप्शन कैसा है, वो प्लेटफॉर्म कैसा है. So just go and see the special classes live, get the first hand experience by yourself, and then एक काम करना आपके लिए रह जाएगा, that is just to get Unacademy Learners प्लस सब्सक्रिप्शन. आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या करना है? आप क्योंकि नीट पीजी एस्पायरेंट हो, आपको नीट पीजी का सब्सक्रिप्शन लेना है. आपको चूज करना है वेदर यू वांट टू गो फॉर 12 मंथ्स और यू वांट टू गो फॉर 24 मंथ्स, बिकॉज दीज पैकेजेस कम विद वेरी वेरी बल्क डिस्काउंट्स. ओके, डिस्काउंट्स आपके स्क्रीन पे हैं, यू कैन सी देम. व्हाई एम आई वाउचिंग फॉर यू टू हैव बल्क सब्सक्रिप्शन इज बिकॉज जो भी नए टीचर आएंगे वो आपके बल्क सब्सक्रिप्शन के होने की वजह से आपके सामने आ जाएंगे. इफ यू डू नॉट हैव बल्क सब्सक्रिप्शन, you may be missing on to some of the new teachers who might just come onto the platform some months later, and you never know which teacher inspires you and ignites you enough so that you score wonderfully well in the exams. Okay, so once you have chosen कि आपको कौन सा subscription चाहिए, you just need to type my referral code, that is DRSUMIT, Dr. Sumit Live. Okay, and then you will get 10% discount on your bulk subscriptions also. Great. So आगे चलते हैं. आज हमारा जो टॉपिक है, as I said earlier, is lecture number 3 in the series of injuries, and आज हम बात कर रहे हैं regional injuries की. Yes, today we are talking about regional injuries. So let's have a look. What are the important regions जिसके बारे में we want to have a talk today? The regions are skull, meninges, brain, and cervical spine. So we'll be talking about important injuries affecting skull.
What are the injuries which are affecting meninges, brain and cervical spine? Now you have to be very cautious here in understanding that there are lots and lots of pathologies that impact brain, meninges, cervical spine, or maybe the bony skeleton of the head, that is skull. But we are taking up those scenarios which are medico-legally important, what kind of information they generate for us. And we will be beginning from our first topic, that is skull itself. Okay, so जब हम skull देखते हैं ना, हमें क्या पता चलता है? That skull is a unique bone. Okay, skull is a unique bone. It's a round bone covering the brain and the meninges. It's a protective bone to protect the brain. ये सारा कॉन्सेप्ट तो हम जानते ही हैं, बट मैं किस कॉन्सेप्ट में यूनिक बोल रहा हूँ स्कल को? स्कल इज यूनिक बिकॉज इट टेंड्स टू हैव multiple kinds of fractures. Okay, and all these skull fractures are result of different kind of injuries to the skull. Let's see them. Okay, what are some different important kind of skull fractures that we see in medical legal scenario? Fracture number one is linear or a fissured fracture, as you can see. Then there is another fracture which is called as a ring fracture. Okay, another one is called as a gutter fracture. Another one is called as a hinge fracture. Okay, another one is called as a diastatic fracture, which is also known as a sutural fracture. Then there is depressed fracture. Okay, then there is pond fracture, and of course one more is comminuted or spider web fracture. ठीक है, तो इतने तो सिर्फ नाम है डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्चर्स के, जो डिफरेंट इंजरीज में स्कल को हो सकते हैं, डिफरेंट सिनारियोज में स्कल को हो सकते हैं. सो लेट्स टेक दीज फ्रैक्चर्स वन बाय वन. ओके, द फर्स्ट वन दैट वी आर टेकिंग अप इज a linear fracture. Okay, so what's a linear fracture? Also known as fissured fracture. So you can call it as a linear fracture, or you can say a fissured fracture. So linear fracture or fissured fracture क्या है? If a blow happens to the skull, okay, and a crack line develops in one of the bones of the skull, maybe a straight crack line or a zigzag fashion crack line, but it's a linear kind of a crack. This is called as a linear or a fissured fracture, as simple as that. Okay, so let's say that this is the calvaria which we are looking at, the skull, and because of the blow a crack happens like this in the skull bone. It will be called as linear or fissured fracture. Okay, एक चीज आज मैं भूल गया, so I'm just stopping for a second in between. I forgot to invite lot of or welcome lot of people जो basically इस समय बोर्ड पे हैं, and I can send Ripan is right now on the board. Hi Ripan, welcome to the class. And Ripan पूछ रहे हैं सर क्या नीट पीजी का पूरा सिलेबस खत्म होगा? रिपन मुझे ये नहीं मालूम आपका सवाल किस कॉन्टेक्स्ट में है, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि हाँ, हमने, अगर आपने ध्यान दिया हो, if you have been following the lectures, so we have started with our first topic Indian legal system. उसके बाद हमने one by one we are picking up the topics, और हम ये पूरा सिलेबस नीट पीजी का ख़त्म करेंगे, बट इट विल टेक टाइम. ओके, 2021 का एग्जामिनेशन आने में समय है, और अगर आप धीरे धीरे लेक्चर्स फॉलो करते रहोगे, we will be completing the whole syllabus. And not only will be completing the whole syllabus कंटेंट वाइज, लाइक अभी शाम की जो हमारी क्लास हो रही है इसमें कंटेंट हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट
what are the important points to be talked about in the regional injuries. Okay, morning में 12 बजे आज ही से we have started to have the topic being covered retrospectively also. We have started special MCQ classes also. Okay, तो प्लीज़ आप उस पर भी आइए. आज हमने स्पेशल MCQ क्लास सेक्शन में 12 बजे क्लास करी है इंडियन लीगल सिस्टम एंड थैरेंटोलॉजी की, और कल होने वाली है पोस्टमार्टम चेंजेस की. ओके, सो आई गेस आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, और अब हम आगे चलते हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल फ्रैक्चर्स. ओके, एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू, लीनियर और फिशर्ड फ्रैक्चर इज व्हाट, किस तरीके के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन skull fracture seen in variety of injuries that may happen to skull. Okay, so remember, this is very important. It comes as an MCQ, that what is the most common skull fracture. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा. रिपन, आपका दूसरा भी सवाल आया है, आप मेरे क्रेडेंशियल्स जानना चाहते हैं. प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, और कुछ और भी वीडियोस हैं पुराने, उसको शुरू से देखिएगा, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा. ओके, आई एम श्योर आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा. आगे चलते हैं. द सेकेंड फ्रैक्चर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इन द लाइन, इफ वी गो बैक टू अवर स्लाइड, वॉज समथिंग कॉल्ड एज रिंग फ्रैक्चर. ठीक है, आप यहाँ देखेंगे वन मोर फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज ring fracture. So let's see what's a ring fracture. Ring fracture is a fracture in the base of the skull. Okay, it's a fracture in the base of the skull, and it is seen in the posterior cranial fossa. Okay, because of a concept which is called as fall from height. So to understand a linear fracture, consider a person who has fallen from height and has landed on his feet or buttocks. So when a person lands on his feet or buttocks, there is a vertical force which runs because of the impact of his landing through the vertebral spine onto the base of the skull, because the base of the skull is resting on the spinal column, and because that force hits the base of the skull, a fracture line develops around the foramen magnum in posterior cranial fossa, maybe completely surrounding the foramen magnum or partially surrounding it, doesn't matter, both are called as ring fracture. So मैंने अभी आपको क्या कहा, ring fracture is basically seen in the posterior cranial fossa. So if we draw, okay, the base of the skull, then we are saying that ring fracture will be seen something like this. A fracture surrounding around foramen magnum, either involving the complete circumference of foramen magnum or partially around it, doesn't matter, both are called as ring fracture. Importance क्या है ring fracture का? This presence of this fracture at the time of autopsy signifies us that it's a case of fall from height. Okay, क्या ring fracture will be seen in each skull when a person falls from height? Maybe not. Okay, the concept that we are talking about is that when a person falls from height and lands on his feet or on his buttocks, there is a vertical transmission of force because of his landing through the vertebral column, and it goes and hits the base of the skull, because the base of the skull is resting on the vertebral column, and because of this impact आपको
एक फ्रैक्चर लाइन मिलती है अराउंड द फोरामन मैग्नम विच इज कॉल्ड एज द रिंग फ्रैक्चर। ठीक है जी। नेक्स्ट फ्रैक्चर हमने कौन सा देखा था जब हम बात कर रहे थे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स में? एक बारी दोबारा देखते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्चर दैट वी सॉ इज कॉल्ड एज गटर फ्रैक्चर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। वन मोर इज कॉल्ड एज गटर फ्रैक्चर। लेट्स सी व्हाट इज अ गटर फ्रैक्चर। Okay, to understand a gutter fracture, you need to understand a concept that I am just telling you. Consider that there is a firearm shot that has been made towards a person. यानी कि एक आदमी पे गोली चलाई गई है, बुलेट, एंड द बुलेट इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द पर्सन। तो बुलेट जो है वो इंसान के पास आ रही है, एंड द पर्सन सडनली डक्स और ही ट्राइज टू टेक एन इवेसिव एक्शन बिकॉज ही नो दैट अ बुलेट मे बी फायर्ड ऑन टू हिम, and instead of hitting the bullet head on onto the skull, the bullet grazes the skull. बुलेट जो है वो स्कल को छू के निकल जाती है। ठीक है। अब बुलेट में इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो बुलेट है जब वो फायर की जाती है तो वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व भी कर रही होती है। जब हम फायर आर्म्स करेंगे हम इसकी बात करेंगे। सो व्हेन अ बुलेट इज शॉट थ्रू अ राइफल्ड वेपन, द बुलेट इज शॉट थ्रू स्पीड्स लाइक 700 मीटर्स पर सेकेंड। इतनी तेज स्पीड से वो निकल सकती है। ठीक है। तो और वो बुलेट घूम भी रही होती है अपनी एक्सिस पे। इफ यू कैन सी दिस पेन इज रोटेटिंग, इफ यू कंसिडर दिस पेन एज बुलेट, इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस व्हाइल द बुलेट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द टारगेट। सो इफ दिस बुलेट इवन ग्रेजेस द टारगेट, अगर छू के भी निकल जाती है, द बुलेट मे कॉज एन इंजरी ऑन टू द स्ट्रक्चर. So if we say that this is the roundness of the skull and a bullet grazes the skull, it does not hit the skull head on, what will happen is this bullet will end up producing this kind of periosteal gutter on the head और on the calvarium. इस चीज को बोलते हैं गटर फ्रैक्चर. यानी कि वो जब बुलेट इस तरीके से छू के निकलती है उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो पेरियोस्टियम में एक नाली बना देती है, गटर बना देती है, एक ट्रैक बना देती है उसके गुजरने का. अंदर नहीं घुसी, सिर्फ एक ट्रैक बना दिया उसने. दिस इज कॉल्ड एज अ गटर फ्रैक्चर. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग गटर फ्रैक्चर is that if we do identify gutter fracture, the medico-legal significance or medico-legal importance is that it qualifies as a bullet shot. तो इंपॉर्टेंस क्या है? इट क्वालिफाइज एज अ बुलेट शॉट. आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, because no other weapon in this world has that kind of a kinetic energy, okay, with such a fraction of time that it can end up producing a gutter fracture kind of injury to the skull. okay good. एक और फ्रैक्चर हम क्या देख रहे हैं? एक और फ्रैक्चर जो हम देख रहे हैं वो है hinge fracture. okay, very very important. next one is hinge fracture. So let's talk about hinge fracture also. You see, this hinge fracture is also given another name. It is also called as motor cyclist fracture. So it is also called as a motor cyclist fracture. Okay, let's try and understand what is this hinge fracture or a motor cyclist fracture. ठीक है, उसके लिए आप कंसिडर करो एक मोटर साइकिल का राइडर. सो somebody is riding a मोटरसाइकिल. ठीक है, उसने क्या पहना होता है? उसने एक हेलमेट पहना होता है.
Now consider this person unfortunately meets a road traffic accident. A road traffic accident of a quality that a bigger vehicle may go over on his head. But because he is wearing a helmet, हाई चांसेस कि उसका जो स्कल है ना वो क्रश नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हो और एक बड़ा व्हीकल आपके सर के ऊपर से चला जाए तो सर क्रश ही हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेक्टिव गियर जो उसने सर पे पहना है, उसके वजह से मैनी अ टाइम्स दीज विक्टिम टेंड्स टू डेवलप अ वेरी पिक्यूलियर काइंड ऑफ अ फ्रैक्चर अगेन इन द बेस ऑफ स्कल. किस तरीके से दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूं. सो इफ वी draw a base of skull, okay, this being the body of sphenoid and here is the foramen magnum. Okay, so this is anterior cranial fossa, this is middle cranial fossa, and this is posterior cranial fossa. So in these people, a fracture developed, very peculiar fracture in the base of skull, where the fracture line runs from one middle cranial fossa to the other middle cranial fossa in the base of skull through the body of sphenoid, as you can see. Thus dividing the base of skull into two halves. ठीक है, तो बेस ऑफ स्कल जो है वो दो हाफ्स में डिवाइड हो गया. जो उसका वॉल्ट है वो सिंगल है, वो प्रोटेक्टेड है. सो हाउ डज इट लुक लाइक? सो इफ यू कंसिडर दिस एज द वॉल्ट and this at the base of skull, so this is whole complete round. Now base of skull has gotten divided into two halves, but the vault is intact. So the base of skull is hinging in an anterior part and a posterior part. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. The vault is intact and thus the skull is hinging through the vault in an anterior part and a posterior part, because the skull has been divided in the base. This is called as a hinge fracture, and because lot of these fractures have been found in people who drive two-wheelers or motorcycles, that's why another name is given to it called as motor cyclist fracture. ठीक है, let's see और कौन सा fracture देखा हमने skull में. One more that we saw in skull is called as diastatic fracture. Okay, diastatic fracture. Let's see diastatic fracture क्या होता है. Diastatic fracture is also known as sutural fracture. So you can say it as diastatic fracture or sutural fracture. So what is a diastatic fracture or a sutural fracture? As the name suggests, जैसा कि नाम में ही लिखा है, sutural fracture मतलब जो skull bones के suture हैं वो खुल जाएं. So you know there are lots of bones in the skull joined together with a skull suture. जैसे कि हम अगर कहें तो हमारे skull के बीचों बीच दो parietal bone ज्वाइन होती हैं एट सजाइटल सूचर. सो कैसा रहेगा अगर पैराइटल बोन तो इंटैक्ट है मगर इन दोनों का जो जंक्शन है सूचर वो खुल गया. दिस इज कॉल्ड एज डायस्टेटिक फ्रैक्चर और सूचरल फ्रैक्चर. ठीक है, हम इस सूचरल फ्रैक्चर का मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखें कि हमें ये इंफॉर्मेशन क्या कन्वे करता है. तो देखिए ऐसा है कि अगर आप हाथ में कोई एक हॉलो बॉल पकड़े, लेट्स से टेनिस की बॉल, एंड यू स्क्वीज दैट टेनिस बॉल, सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? यू आर ट्राइंग टू डिफॉर्म ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. ओके, व्हेन यू आर स्क्वीजिंग द बॉल यू आर ट्राइंग टू डिफॉर्म ए स्फेरिकल हॉलो स्ट्रक्चर. सो इनसाइड द स्ट्रक्चर द प्रेशर विल राइज and the structure probably will break
if the pressure inside the structure will rise too much at its weakest point. तो जब प्रेशर अंदर बढ़ेगा तो वो स्ट्रक्चर जो है अपने वीकेस्ट पॉइंट पे टूट सकता है. ओके, सेम चीज होती है स्कल के साथ में. व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस एक्ट ऑन टू द स्कल, ऐसी फोर्सेस जो स्कल के इंटेग्रिटी को डिफॉर्म करना चाहती है. When deforming forces act onto the skull, the pressure inside the skull rises and the skull gives up at its weakest point. और skull के जो weakest point होते हैं वो होते हैं skull के sutures. And at that point of time, we can have a sutural fracture. So what did we learn here is that sutural fracture are result of deforming forces acting on the head. ओके, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्सेस हेड पे कैसे एक्ट कर सकती हैं? एक दो सिनारियोज लेके देखते हैं. तो पहला सिनारियो कंसिडर करो, एक आदमी है और उसको दूसरा आदमी एक डंडे से अटैक कर रहा है. ठीक है, तो जो पहला आदमी है हु इज द विक्टिम, वो भाग रहा है, उसका हेड जो है वो फ्री है, वो भाग रहा है, और दूसरा आदमी उसको पीछे से डंडा मारता है. सो आपको क्या लगता है इस केस में डिफॉर्मिंग फोर्सेस एक्ट करेंगी उसके स्कल पे? प्रोबेबली नॉट. फॉर डिफॉर्मिंग फोर्सेस टू बी एक्टिंग ऑन हिज स्कल, my guess is his skull should be fixed from one side and the pressure onto the skull shall come from the other side. This will cause squeezing or deforming of the skull, and that can happen in cases of road traffic accidents. When a person has fallen down onto the road because he has been hit by a vehicle and suddenly a tire of any smaller vehicle goes over onto his head, suddenly the deforming force acts onto his skull. क्योंकि एक तरफ से तो उसका स्कल फिक्स्ड है, दूसरी तरफ से डिफॉर्मिंग फोर्स आया टायर के चढ़ने की वजह से, एंड दी सूचर में ओपन अप. ओके, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है डायस्टेटिक सूचर्स के बारे में याद रखने के लिए. फाइन, गुड. और कौन से हमने अपने क्लासिफिकेशन में देखे हैं सूचर्स? आइए एक नजर और मारते हैं. सो वी हैव डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. We have pond fracture and we have comminuted fracture. ठीक है जी, आइए इनकी बात भी करते हैं. So we have depressed, fracture, we have pond fracture, and we have comminuted fracture. तो डिप्रेस फ्रैक्चर पहले देखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फ्रैक्चर. अगर आप अपने एग्जामिनेशन देखोगे ना हिस्ट्री की, जिसको हम MDMS PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो अभी उसको नीट पीजी बोलते हैं. पहले उसको ऑल इंडिया था, स्टेट पीजीज थे, एम्स अलग होता था, PGI अलग होता था, एंड वैरायटी ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स. सो आई एम कलेक्टिवली लेबलिंग देम एज PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन. पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस स्कल फ्रैक्चर के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है, दैट इज डिप्रेस्ड फ्रैक्चर. ओके, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डिप्रेस्ड फ्रैक्चर. लेट्स से दिस इज द कर्वेचर ऑफ द स्कल, एंड व्हाट आई एम ड्रॉइंग इज द ectocranial portion of the calvaria and the endocranial portion. ठीक है, तो एक्टोक्रेनियम भी ड्रॉ किया है मैंने और एंडोक्रेनियम भी ड्रॉ किया है मैंने, क्योंकि स्कल बोन थिक होती है, एक बाहर का पार्ट होता है, एक अंदर का पार्ट होता है. एंड दिस स्कल बोन इज बीइंग हिट बाय अ हैमर. So we are hitting this skull bone with a blunt weapon, which is hammer. When the hammer hits the skull,
what happens is the hitting portion of the hammer को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका जो hitting portion होता है, एक वो circular hitting portion होता है ना, in the hitting portion of the hammer the skull bone will get cracked into multiple pieces in the circle. The ectocranium gets cracked and this cracked ectocranium gets depressed into the endocranium. तो वो दिखता कैसे है? वो ऐसे दिखेगा आपको. Like this. So the depression जो आपको दिख रही है, that is the hitting circumference of the hammer. और अगर हम इसी चीज को head on देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा? हम अगर स्कल के ऊपर हेड ऑन देखेंगे, इट विल लुक लाइक दिस, ए सर्कुलर एरिया ऑफ क्रैक ऑफ द स्कल बोन इनटू मल्टीपल पीसेस which have depressed inside. This is called as depressed fracture. ठीक है, इसको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्टोक्रेनियम क्रैक होके अंदर डिप्रेस हो गया है. नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू सी इन दिस फ्रैक्चर इज कि वो जो एक्टोक्रेनियम क्रैक होके डिप्रेस हुआ है ना अंदर, वो किस शेप में हुआ है. शेप इज इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप ध्यान दोगे तो इस फ्रैक्चर ने शेप ली है, व्हाट इज द शेप ऑफ द हैमर इटसेल्फ. ठीक है ना, क्योंकि हैमर का जो हिटिंग पोर्शन है वो एक सर्कमफरेंशियल है, तो उसने सर्कमफरेंशियल शेप ले ली है फ्रैक्चर ने भी. दैट इज व्हाई दीज फ्रैक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड एज सिग्नेचर फ्रैक्चर्स. So they are also called as signature fractures, as if the weapon has signed over the skull that a particular weapon was responsible for providing this injury. यानी कि वेपन का इंप्रेशन मार्क आ गया स्कल के ऊपर. उस फ्रैक्चर के शेप को देख करके आप वेपन बता सकते हो किस तरीके का होगा. दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्नेचर fracture. Very very important fractures when we talk about homicidal attacks or assault with blunt weapons on the head. ठीक है. अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके बारे में देखने के लिए, वो क्या है कि क्या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर किसी भी टाइप के ब्लंट वेपन अटैक से हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव हैमर. अब हैमर की बजाय हमारे पास में मान लो अगर एक पत्थर होता, स्टोन, बड़ा चट्टान का एक पीस जिसको बोलते हैं ना पत्थर, क्या उसको सर पे मारने से भी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो जाता? द आंसर इज नो. नो. व्हाई? बिकॉज टू कॉज अ डिप्रेस्ड फ्रैक्चर आपको कुछ पिक्युलैरिटीज चाहिए वेपन में. वो क्या है? टू कॉज अ डिप्रेस्ड फ्रैक्चर वेपन शुड बी ब्लंट, weapon should be heavy. ठीक है, तो हम कहेंगे हैमर क्या ब्लंट है? हाँ, हैमर ब्लंट है. पत्थर ब्लंट है? हाँ, पत्थर भी ब्लंट है. इज हैमर हैवी? यस, इट्स अ हैवी ब्लंट वेपन. इज अ स्टोन हैवी ब्लंट वेपन? यस, इवन द स्टोन इज ब्लंट वेपन. बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस? दैट टू कॉज अ डिप्रेस्ड फ्रैक्चर द वेपन शुड हैव small striking area. Very very important thing to remember. Lot of students consider that if a weapon is heavy and blunt and that weapon is used to hit on the skull, it will end up causing depressed fracture. No, I just gave you an idea, a comparison, that if you have a hammer and if you have a stone, if you will hit a big stone on the head, it will not end up giving a depressed fracture on the skull. Why? Because stone tends to have a large hitting surface area. Okay,
and that large hitting surface area with such a heavy nature of stone will end up crushing the skull. वो डिप्रेशन नहीं करेगा, वो क्रश कर देगा स्कल को. ठीक है जी. तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है, और यही दो चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट entrance examination about depressed fracture. Okay, next in line is pond fracture. Pond fracture क्या होता है? Pond fracture seems to be a misnomer because actually इसमें bone fracture होती ही नहीं है. Pond fracture basically is an indentation. It's an indentation of skull बोन. इंडेंटेशन मतलब हिंदी में उसे बोलेंगे जो बोन है वो टूटी नहीं है, वो धस गई है, वो इंडेंट हो गई है. ठीक है, इट्स एन इंडेंटेशन ऑफ स्कल बोन. एंड व्हेन विल दिस हैपन, द इंडेंटेशन ऑफ स्कल बोन? इट विल हैपन व्हेन द बोन इज स्टिल कार्टिलेजनस. क्योंकि अगर आप कार्टिलेज को दबाओगे, हाई चांसेस कि वो टूटेगा नहीं, पर उसमें एक डेंट आ जाएगा. ओके, एंड व्हेन इज द स्कल बोन कार्टिलेजनस? इट इज इन द infancy. So basically what we are saying is that pond fractures are possible in infancy only, when it's an infant skull, because infant skulls are cartilaginous. So if you apply pressure to infant skull, the skull may not break, but because of the cartilaginous nature of the skull bone at that point of time, they may get a dent. And when the child grows up, the skull calcifies, that dent can be seen as a deformity in the skull. Particularly very important in cases of forceps delivery. So अगर आपने अपनी obstetrics में पढ़ा है, there is something called as forceps delivery, that when there is an obstructed labor, a maternal forceps is applied, where the head of the fetus is grasped by the forceps and the fetus is pulled out of the vaginal canal. So while the head of the fetus is grasped by that forceps, the forceps may produce enough pressure to produce a pond fracture in the skull of the fetus. ठीक है जी. And last fracture that we are talking today is called as a spider web fracture or comminuted fracture. So this kind of a skull fracture is a result of a blunt, flat and heavy weapon being hit onto the head. कैसा चाहिए हमें? Blunt, flat and heavy. So consider करो कुछ एक iron rod है जो थोड़ी flat है. If you hit that iron rod onto the head, onto the vault, तो उस iron rod के impact से क्या होने वाला है? At the area of impact, the bone may be cracked, and then many radiating cracks may be seen originating from the central fracture of the bone, like this. So if this is the vault and you hit the vault with blunt, flat and a heavy kind of a weapon, the central bone may get a crack like this, and we may have many other cracks radiating from center, and some of the cracks may radiate to involve the already radiating branches also. So this looks like a spider web. एक स्पाइडर जिस तरीके से वेब बनाता है ना अपना, इसीलिए इसको एक स्पाइडर वेब फ्रैक्चर भी कहते हैं. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि स्कल में बहुत तरीके के फ्रैक्चर्स होते हैं, और हर एक फ्रैक्चर का अपना एक मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस है, बिकॉज
these fractures may be seen in either a unique variety of weapon being used or maybe in certain kind of mannerisms or scenarios. वो हर सिनारियो में मिलने की उम्मीद नहीं है. So depending upon हमें ऑटोप्सी एग्जामिनेशन में क्या मिल रहा है, वी कैन हैव अ वेरी साइंटिफिक ओपिनियन कि किस तरीके का क्राइम सीन रहा होगा. ओके, दैट्स हाउ दे हेल्प. ओके ओके फाइन. फ्रॉम स्कल नाउ लेट्स मूव इनसाइड. जब हम स्कल से अंदर आते हैं, द नेक्स्ट anatomical thing that we encounter are called as meninges. Okay, and because of the trauma to head, we can have three kind of meningeal bleeds. One is a meningeal bleed which is outside of dura but inside of endocrinium. That space is called as extradural space. So between the endocrinium and the dura is the extradural space. अगर वहां पर कलेक्ट होती है ब्लीड तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज. ओके, आपके लिए फोटोग्राफ नंबर 1 है, उसको देखिए. फोटोग्राफ नंबर 1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज. और मैं इसको एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज क्यों कहूँगा? बिकॉज यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ द skull has been cut. You can see the cut portion of skull here. And once the skull bone has been cut, the calvaria has been cut, you can see this shiny structure here. This shiny structure which is hiding the brain convolutions. आपको brain के convolutions नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर. This is dura. And this is the bleed which is collected on top of dura. If you can see that. So ऐसी bleed जो dura के ऊपर है, वो क्या है? एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज और EDH. ठीक है, इसको हम कॉमनली बोलते हैं EDH. एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज बड़ी फैसिनेटिंग होती है. एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज जो है वो बाकी स्कल ब्लीड्स के कंपैरिजन में सबसे कम पाई जाती है. सो इफ वी टॉक अबाउट क्रेनियल ट्रॉमा, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेजेस may be seen in 1 to 3% of cases only. So what we are saying is extradural hemorrhages are not very common. If we say head injuries, extradural hemorrhages may be seen in 1 to 3% of head injury cases. That's all. So अगर हम 100 cases of head injury देखें, 100 cases of head injury, we may get extradural hemorrhage in 1 case only. The least possibility is 1 case. The maximum possibility is 3 cases. Fine. So just be with this information. We'll come back to it. The other injury, other hemorrhage that is beneath the dura is called as the subdural hemorrhage. Okay. So in picture number 2 here, you see what's a subdural hemorrhage. Now why it is subdural? Because right now you can see the convolutions of the brain, the dura has been removed and there is a collection of bleed, as you can see here, on the top of the brain after removing the dura, which means that the bleed was beneath the dura, and that's the subdural space. Okay, now आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई ड्यूरा के नीचे तो एरिक्नॉइड स्पेस भी है, तो ये सब एरिक्नॉइड स्पेस, सब एरिक्नॉइड ब्लीड क्यों नहीं है? क्योंकि सब एरिक्नॉइड ब्लीड जो है ना, वो आपको मैं फोटोग्राफ नंबर 3 में दिखा रहा हूं. यू कैन सी हेयर एंड यू कैन फॉर योर सेल्फ सी द डिफरेंस बिटवीन दीज कलेक्शंस ऑफ सब एरिक्नॉइड ब्लीड हेयर. ठीक है, मैं पेन की इंक चेंज कर लेता हूं so that you can see better. So you can see the difference of subarachnoid bleed being collected here. Also here, these are all subarachnoid bleeds. Okay, and you can see that it here also. ये देखिए. Now, can you see a difference? And that is that in photograph number 3, the bleed is collected
बीनीथ द एरेक्नॉइड मैटर। और एरेक्नॉइड मैटर जो है ना, वो ब्रेन कॉन्वोल्यूशंस के ऊपर बड़ा पतला सा मैटर होता है जो चिपका होता है। सो एज सच व्हेन यू लुक एट सब एरेक्नॉइड ब्लीड, वो इतनी मोटी कलेक्शंस नहीं दिखती जैसी आपको यहां दिख रही है। कैन यू सी दैट्स अ वेरी बिग कलेक्शन, अ वेरी थिक काइंड ऑफ अ कलेक्शन, जस्ट लाइक अ कलेक्शन विच वी सॉ हेयर इन द एक्स्ट्राड्यूरल ब्लीड। ठीक है, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस ही ज्यादा नहीं होता तो वहां इतना मोटा मोटा थिक लेयर ऑफ कलेक्शन नहीं हो सकता। अगर फिर भी आपको कोई डिस्प्यूट हो या ऑटोप्सी में हमने देखा और हमें समझना है वेदर इट इज सब एरेक्नॉइड और सबड्यूरल, वी कैन परफॉर्म अ वेरी सिंपल टेस्ट। व्हाट इज दैट टेस्ट? जस्ट थ्रो वाटर ऑन टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, नाउ बिकॉज द सबड्यूरल ब्लीड is on top of the arachnoid matter and below the dura matter, and the dura matter has already been stripped off. So when we will throw water onto the brain, the subdural bleed will be washed off, वो wash off हो जाएगी। but अगर वो subarachnoid bleed है, it will not get washed off because of throwing of water onto the brain matter after removing dura, because subarachnoid bleed is still beneath the arachnoid matter, so we can differentiate it very easily. ठीक है, one is the thickness and second is you can perform the water test. okay, so this is an idea कि किस तरीके से हम ऑटोप्सी में डिफरेंशिएट करते हैं किस तरीके की ब्लीड है। बट व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अस टू अंडरस्टैंड इन दिस स्मॉल टाइम दैट वी हैव कि व्हेन वी परफॉर्म ऑटोप्सीज, what is the sequence of bleed that we encounter, what is their frequency to be seen in cases of head injury. The sequence is, hold on, the sequence is subarachnoid hemorrhage followed by subdural hemorrhage followed by extradural हेमरेज। ओके, यानी कि ऑटोप्सी करते समय हेड इंजरी के केसेस में हमको जो ब्लीड सबसे ज्यादा मिलती है दैट इज सबएरेक्नॉइड हेमरेज फॉलोड बाय सबड्यूरल हेमरेज विच इज सीन इन अबाउट 20-25% केसेस। ओके, एंड देन एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज विच इज सीन इन 1-3% केसेस ओनली। आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज सबसे कम दिखाई देती है बट उसका मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। और वो क्या है? एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज इज द ओनली हेमरेज विच इज एक्सक्लूसिव टू क्रेनियल ट्रॉमा। कहने का मतलब सबएरेक्नॉइड हेमरेज और सबड्यूरल हेमरेजेस नॉन ट्रोमैटिक कंडीशंस में भी होती हैं। आपने मेडिसिन में भी पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, सर्जरी में भी पढ़ा होगा, केसेस ऑफ hypertensive bleed, cases of aneurysmal ruptures, bleeds in the subdural region in cases of leukemia, in anticoagulant therapies, and there are so many other pathologies where subdural or subarachnoid hemorrhages can happen. They can also happen in cranial traumas. Extradural bleed is exclusively traumatic. Extradural bleed नॉन ट्रोमैटिकली नहीं होती। नॉट ओनली एक्स्ट्राड्यूरल ब्लीड इज एक्सक्लूसिवली ट्रोमैटिक, एक्स्ट्राड्यूरल ब्लीड डज नॉट हैपन इन ट्रिवियल ट्रॉमास। अब आप बोलोगे ट्रिवियल ट्रॉमास क्या होते हैं? ट्रिवियल ट्रॉमास लाइक एल्कोहलिक फॉल्स, यू नो, पीपल हु आर अंडर द gaze of alcohol, chronic alcoholics, they walking on the road, they may just fall, or they may just hit the entry of the door because they don't have their senses. So these are not very significant intense injuries. So subdurals can happen in alcoholic falls, but extradural would not happen, because for an extradural hemorrhage to happen, head requires a very intense trauma. Okay, for example, अगर मैं लाठी से किसी के सर पे जोर से मारूं, now that's an intense trauma which can cause an extradural hemorrhage.
और क्योंकि एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेजेस एक इंटेंस ट्रॉमा से ही होते हैं, इट इज सेड दैट एन एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज is always accompanied by a fracture of the skull in the vicinity. Okay? क्योंकि अगर इतना इंटेंस ट्रॉमा है तो वो स्कल बोन को भी क्रैक करना ही चाहिए. ठीक है, अगर कोई छोटा मोटा ट्रॉमा हो, ट्रिवियल ट्रॉमा हो, जैसे हमने एल्कोहलिक फॉल्स बोले, एल्डरली फॉल्स होते हैं, तो कई बार स्कल बोन क्रैक नहीं होती, बट सबएरिकनॉइड और सबड्यूरल हेमरेजेस डेवलप हो सकते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में क्योंकि एक इंटेंस ट्रॉमा होता है, सो स्कल बोन का क्रैक होना लाजमी है. लिटरेचर सेज 95% EDH are associated with skull fracture. Okay, 5% is a very rare occasion जब एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज हमें मिल रहा है बट स्कल इंटैक्ट है. ठीक है, तो इन दी वर्ल्ड ऑफ ऑटोप्सी डूअर्स हम लोग क्या मानते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ फ्रेज दैट वी यूज. वी से दैट इफ समबडी इज रिपोर्टिंग एन एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज ऑन cranial dissection and simultaneously he is reporting that skull is normal, there is no fracture in the skull, then the chances of that he would have stumbled on a rare occasion or rarity is very low. High chances are that he has missed the skull fracture. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा रिपोर्ट करता है ना कि एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज और स्कल फ्रैक्चर नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बहुत कम चांसेस हैं कि उसने एक रेयर ओकेजन डायग्नोज कर लिया या रेयर ओकेजन मिल गया. हम ये मान के चलते हैं कि शायद उसने स्कल फ्रैक्चर मिस कर दिया अपने इंस्पेक्शन में. ओके, सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज. आगे चलते हैं. अगर हम स्कल से अंदर जाएं थोड़ा सा, तो हमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है वो ब्रेन इटसेल्फ है. ओके, ऑल्दो बिकॉज ऑफ ट्रॉमा और एनी अदर रीजन ब्रेन में बहुत सारी इंजरीज होती हैं, बट वन ऑफ द इंजरीज विच इज वेरी वेरी यूनिक टू ब्रेन is called as coop and country coop injuries due to trauma to head. Okay, so मैं आपको बताता हूँ कूप और काउंट्री कूप होता क्या है. सो कंसिडर करो ब्रेन पे सामने से, हेड पे सामने से हिट किया गया, तो स्कल में कुछ इंजरीज होगी, कुछ मेनिंजियल ब्लीड हो सकती है, कुछ ब्रेन में भी इंजरी हो सकती है, कॉन्ट्यूजन्स हो सकते हैं, लैसरेशंस हो सकते हैं, इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग्स भी हो सकती हैं, ब्रेन मैटर के अंदर ब्लीड भी हो सकती है. तो जो इंजरी तो ब्रेन के उस एरिया में हुई जहां पर ब्रेन को डायरेक्टली हिट किया गया था, उसको तो बोलते हैं कूप इंजरी. ओके, नाउ बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ब्रेन इज अ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर. इट्स अ कैविटी विद इन अ कैविटी विद इन अ कैविटी. कैसे? ब्रेन है, फिर उसके ऊपर मेनिंजियल कवरिंग है, एंड देयर इज अ गैप बिटवीन मेनिंजेस एंड ब्रेन. Okay, there is always a potential space between them, and then after meninges is the skull, and there is a potential space between the skull and the meninges. So whenever a hit happens onto the skull, which basically forces the skull into a movement, these three cavity spaces along with the structures, they also move. So head move, meninges move, brain move. Now brain is the innermost structure and the heaviest structure of the three. So always whenever there is a movement to brain because of a trauma, movement of head, because of trauma, the brain lags in their movement. Brain पीछे रह जाता है. So बाकी दोनों structure, that is the meninges and the skull, they move earlier as compared to brain because of the high inertia of brain, and brain थोड़ा सा पीछे रहता है, जिसके कारण जब brain मूवमेंट में स्टॉप करता है तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज द मेनिंजेस एंड द स्कल, दे आर ऑलरेडी स्टेशनरी. सो ब्रेन आकर के उन स्टेशनरी स्ट्रक्चर्स को हिट करता है. ओके, थोड़ा सा आपको विजन अपना बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ. सो व्हाट वी आर सीइंग इन दिस फोटोग्राफ आल्सो, हैव अ लुक दैट
this is the area of primary impact. Okay, and if the skull is moving in the forward direction, and here we are seeing the skull is moving in the backward direction, so coup and counter coup brain injuries are: the coup injury happen at the site of the impact, and the counter coup injury happen to the diagonal side opposite to the primary side. So counter coup is the diagonal opposite side of ब्रेन. एंड काउंटर कूप इंजरी क्यों होती है? जैसे कि मैंने आपको एक थ्योरी अभी बताई, दैट बिकॉज ऑफ द हिट टू द हेड, द स्ट्रक्चर्स go into a motion, and because of the high inertia of the brain, which is the heaviest structure out of the meninges, skull and brain, the brain lags in the motion, brain पीछे रह जाता है, and when the brain comes to the end of the motion, the external structures are already stationary, तो brain आकर के अपने ही external structures के internal surface से टकराता है, and so the contralateral aspect of the hit of the head also develops an injury. So if somebody hits me from the front, there are chances that I may develop certain injuries at my occipital region also, along with the frontal region. So frontal region में जो direct impact की वजह से इंजरी हुई है वो है कूप इंजरी, और occipital region में जो इंजरी होगी that will be called as counter coup injury. Okay. सो ये कॉन्सेप्ट ब्रेन के बारे में बड़ा यूनिक है. दैट इज व्हाट वी नीडेड टू रिमेंबर. फाइन. और ये काउंटर कूप पैटर्न ऑफ इंजरी किसी और ऑर्गन में नहीं होती. काउंटर कूप इंजरीज आर ओनली सीन इन द ब्रेन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक पोजिशन. जो मैंने अभी पोजिशन की बात करी, द कैविटी विद इन अ कैविटी विद इन अ स्ट्रक्चर विद इन इट. ओके. और आज की हम जो लास्ट चीज बात करेंगे, एंड अ स्पेशल रीजन दैट इज सर्वाइकल स्पाइन. तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से अंदर अंदर आते जा रहे हैं. तो पहले हमने स्कल देखा, फिर मेनिंजेस, फिर ब्रेन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वाइकल स्पाइन रीजन, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, आई वांट यू टू फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन एंड हेड दैट्स हैपनिंग in these regions. What can you see? Okay, what are we seeing here is called as whiplashing. आपने चाबुक देखा है, इस तरह से मारते हैं चाबुक को, उसको बोलते हैं whiplash. Okay, what there is an injury that happens in that pattern, that is called as a whiplash injury. To understand a whiplash injury, let's take up a model जो whiplash injury का बड़ा classical model है. In this model, what we see is that there is a person who is driving a car. So consider a person who is driving a car, और वो सीट बेल्ट से बंधा हुआ है, तो वो तो सीट से बंधा हुआ है. Now the car is in the acceleration, and what if the car suddenly comes to a halt because the car meets an obstacle? Now the moment the car strikes an object and the car loses all its acceleration, the car suddenly goes into a deceleration. So the phenomena that we are seeing is acceleration followed by sudden deceleration in a motor vehicle accident. Okay, now when this phenomena of acceleration followed by sudden deceleration happens, what happens to the person who is driving the car? Because his body is trapped with the seat because of the seat belt that he is wearing, the moment the car strikes, his neck is forced into a hyper followed by sudden flexion. ठीक है, जैसा कि मूवमेंट हम यहाँ देख पा रहे हैं इस स्केलेटन में. जैसे ही कार स्ट्राइक करती है, his neck is forced into a hyperextension followed by sudden flexion. Sudden acute hyperextension, the cervical spinal cord hits the anterior portion of the vertebral column, and cervical spine can develop injuries.
There could be spinal laceration, spinal contusion, spinal edema. There could be cervical vertebral spine dislocations, or in lesser kind of an injuries, जहाँ पर इंजरी का जो इंटेंसिटी है वो कम है, there could be some neuronal damage or there could be some muscular injury only. So from external muscular injury वहां से लेकर के इंटरनल स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज तक सब कुछ हो सकता है विप्लैश इंजरी में, ठीक है। इसको विप्लैश इंजरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज स्पाइनल सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड को किसी ने छुआ भी नहीं, बट स्टिल वी मे फाइंड सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड injuries in these people who meet with road traffic accident. And if the edema of the cervical spinal area involves the upper respiratory center, deaths can also happen. Or even if the person survive, उसको neurological complications हो सकते हैं, ठीक है। Now one more thing which is very important to remember about these cervical spinal cord whiplash injury is that ऐसा कहा जाता है कि whiplash injury उस आदमी में होने की चांसेस ज़्यादा है, या इंटेंसिटी whiplash injury की उस आदमी में ज़्यादा होगी जिसने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के टाइम पे सीट बेल्ट पहनी हुई होगी। एंड वो ड्राइवर तो पक्का ही होगा। क्यों? क्योंकि सीट बेल्ट पहने होने के कारण उसकी बॉडी जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाती, उसका नेक फ्री होता है, इसीलिए वो जो एक्यूट मूवमेंट्स होते हैं वो नेक के लेवल पे होते हैं। अगर उसने बेल्ट नहीं पहनी होती, दैट एक्यूट मूवमेंट probably would have happened at the level of his body only, and probably whiplashing effect would have been lesser in that person who was not wearing the seat belt, or maybe whiplash would not have affected that person. So theoretically it is said that people who are sitting in the back seat of the car, they may be spared from the whiplash effect in a head-on collision of a car accident because they may not be wearing a seat belt. Okay, remember this. हम इसके बारे में कल भी बात करेंगे when we will talk about road traffic accident. Okay, तो आज की क्लास हम यहाँ पर रोक रहे हैं। I'm inviting you all to come tomorrow. We'll be live at 7 p.m. tomorrow also, and we will be talking about road traffic accident. But that's not all. कल 12 बजे दिन में we have our special MCQ class also coming up. Okay, आज हमने अपनी स्पेशल MCQ क्लास में किया था Indian legal system and thanatology. In the upcoming tomorrow's special MCQ class, we will be doing post-mortem changes. We'll take up certain MCQs on post-mortem changes. हम post-mortem changes की एक प्राइमरी क्लास पहले YouTube पे ले कर चुके हैं few days back, okay? बट अब हम क्या करेंगे? We'll take up certain questions और फिर हम उसको कोरिलेट करके देखेंगे कि उस समय हमने जो पढ़ा था और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या हम उस इंफॉर्मेशन के साथ में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस इन टुमारोज क्लास जो हमने कंटेंट में नहीं पढ़ा था, बिकॉज कंटेंट में 1 घंटे का टाइम था, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। कोई बात नहीं, हम वो वाला जो एरिया है वो रेट्रोस्पेक्टिवली क्वेश्चन से कवर कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली हम जब उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सो लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट ईजी एंड इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। ठीक है जी, तो आज यहाँ पर हम अभी रुकते हैं, ख़त्म करते हैं आज की क्लास। एंड बिफोर आई गो अवे, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू वंस मोर दैट यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम at livedaily.me/neetpg। जल्दी से आओ, कोई सी भी क्वेरी है उसको आप वहाँ डालिए एंड दैट शैल बी आंसर्ड। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइव क्लासेस हैं वहाँ पर, आपके पास में ऐसे एजुकेटर्स हैं जो आपसे इंटरेक्ट करते हैं। वी डोंट शाई फ्रॉम इंटरेक्टिंग फ्रॉम यू, बिकॉज अल्टीमेटली आवर गोल इज़ कि आप हमसे इंटरेक्ट करो ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। वी हैव टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स दैट्स अवेलेबल। ये सारी इम्पैक्टफुल चीज़ें होती हैं जो आपको अपने प्रिपरेशन में आगे रखने में हेल्प करती हैं ऑलवेज।
एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, वी हैव लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। एंड नॉट टू मिस आउट, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पेशल क्लासेस हैं इस बोर्ड पे। आप जब अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे एंड यू विल गो टू नीट पीजी सेक्शन, you will see a tab जहाँ पर लिखा हुआ है special classes. They are absolutely free. Go watch those special classes taken up by some very wonderful teachers. उससे आपको पूरा एक आइडिया मिलेगा प्लस सेक्शन में आपके लिए क्या अवेलेबल है. Once you are satisfied, go and buy the plus section. ठीक है, प्लस सेक्शन बाय करने के लिए क्या करना है, लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है अनअकैडमी का, उसको इंस्टॉल करना है. एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया, आप वहां पर जाओ मैनेज गोल्ड सेक्शन पे. मैनेज गोल्ड सेक्शन में आपने चुनना है कि आपने ये ऐप क्यों लिया है. आपने ये ऐप क्यों लिया है, बिकॉज यू वांट टू क्रैक नीट पीजी, सो यू नीड टू सिलेक्ट नीट पीजी. वंस यू हैव सिलेक्टेड नीट पीजी, गो फॉर प्लस. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नीट पीजी पे जब जाओगी तो स्पेशल क्लासेस भी होंगी. तो मैं इस समय बात कर रहा हूँ कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्पेशल क्लास ऑलरेडी देख ली है. So now you are going for plus subscription. So click the plus subscription and get the subscription. Get subscription में आपके पास में ऑफर आएगा कि आप किस तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो. Recommendation. Do not buy anything else. Buy the bulk subscription. 12 महीने, 24 महीने. अगर आप इसी साल एग्जाम देने वाले हो, 12 महीने इज वर्केबल फॉर यू. अगर आपके पास टाइम है, आप फाइनल ईयर में हो, 24 महीने इज ब्रिलियंट फॉर यू. ठीक है, जितना ज्यादा समय आप लगाओगे उतने ही कम पैसों में मिलेगा. 12 महीने इज 22,500 ओनली एंड 24 मंथ्स इज 27,000 ओनली. पैसा 4,500 रुपया ज्यादा है, बट समय डबल है. बल्क सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा कोई भी नया टीचर मिस नहीं करेंगे. जो भी आएंगे सबको देख पाएंगे. ठीक है, वंस यू पे बाय वॉट एवर फॉर्मेट यू वॉन्ट टू पे, ओके. एंड पेमेंट से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और, हाँ, आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करो ना पेमेंट के लिए, डॉक्टर सुमित लाइव. ये आपको 10% डिस्काउंट दिलाता है जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो. ठीक है, एक बार आपने पे कर दिया, यू आर रेडी टू गो इन टू द वर्ल्ड ऑफ नीट पीजी प्लस, जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन पुरानी नई आने वाली सब मौजूद रहेगी आपके पास में. ओके, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, प्लीज डू कीप सब्सक्राइब टू दिस चैनल. यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस कर दो, लाइक एंड शेयर, जो भी आप यूट्यूब पे करते हो सब कुछ करो. अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा लगता तो नहीं है, बट स्टिल अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप मुझे सजेशन दे दो. ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. माई होल आइडिया इज दैट आई शुड बी एबल टू शेयर बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ नीट पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस with you. ठीक है, with that I'll take you leave for tonight, and as I take you leave, I'll just let you be with the last information that my referral code is Dr. Sumit Live. Use this referral code to get 10% discount whenever you have to take any Unacademy subscription. Okay, bye bye, stay tight tonight. And all those who are watching this video, we will be live again on Thursday, okay, that is 27th of August at 12 noon. The questions of post-mortem changes, and then later on 7 p.m. 27th of August, discussing lecture 4 of injuries, talking about road traffic accident. Okay ji, bye bye, see you tomorrow.